Hello and good evening, Cinema Satsang viewers. How are you doing? Well, today I'm excited to interview Shruti Vyas. Yes, she was in Dahaad. Her character's name was Shivangi, I think, right? And she was playing Yeah. Gulshan Devaiah's wife, the inspector who was in charge of the main case and the police station, Mandwa, right? Mandwa. Mandawa. Yes. Mandawa. Yeah. It's called Mandawa. Mandava. Yes, so Sonakshi was in charge of the main case, but he was the head over there. A very powerful Yeah. actor, and along with him, we had playing his wife, Shruti Vyas, equally powerful actor, and she stood her ground in front of him and gave him punch for punch. मतलब बहुत ही अच्छा आप लोगों का जो सीन्स थे बहुत अच्छे थे और आपने मतलब बखूबी से मतलब दोनों अच्छे एक्टर एक ही फ्रेम पे तो सीन और निखर के आ जी। जी। और अच्छा लिखा हुआ भी हो, जी तब और मजा आता है करने में। तो कुछ बताइए ये जो आप लोगों का जो सीन्स के बारे में कि हाउ हाउ डिड इट ऑल गो एंड बिकॉज आई थिंक गुलशन इज आल्सो अ वेरी गुड एक्टर एंड देन यू स्टूड अप टू हिम एंड जी। both of you just Yeah. nailed it. No, I mean, as you know, Kabir, as an actor, very rarely आपको ऐसे सीन्स लिखे हुए मिलते हैं जो जिसको आप पढ़ो और आपको वो पढ़ के कैरेक्टर भी समझ में आ जाता है, रिश्ते की हिस्ट्री भी समझ में आ जाती है। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट रीमा कगती कि वो इतना अच्छा लिखती हैं कि आपको परफॉर्म करने में भी मजा आता है। The way she writes a whole scene, you can understand the subtext and in between and the history also of the situation of the characters. And like I was telling you earlier that we shot this before COVID. उसके बाद दो बार लॉकडाउन आ गया था। तो जब आप कोई प्रोजेक्ट के लिए शूट करते हो फिर आई थिंक 3-4 साल तक कुछ पता नहीं चलता उस प्रोजेक्ट का। पहले इस प्रोजेक्ट का नाम कुछ और था। अच्छा। तो फिर देन यू काइंड ऑफ लूज एक्सपेक्टेशन। हम्म। And also because I knew that the main storyline was revolving around the case, revolving around, Vijay Varma, Sonakshi, Soham, and Gulshan. They are the four people who's driving the whole show. So I didn't know और कौन कौन है क्या है। मुझे सिर्फ अपने रूल के बारे में पता था and I was very happy whatever the scene that was given to me. And I knew कि मेरे पास दो सीन है where I can really perform and enjoy performing. मुझे तब पता भी नहीं था that Gulshan was actually playing. मुझे ये भी नहीं पता था कि सोनाक्षी है इसमें। I think the first time I went for the reading, that's when I saw Sonakshi and Gulshan and Vijay was shooting at that point, Soham wasn't there. तब मैं actually बाकी सब लोगों से मिली, बाकी सारे actors से मिली, and it was very surprising for me to work in an environment where everybody was so open for suggestions. Like जो हमारा fighting scene था, I had suggested them that it would be nice कि जब husband घर पर आ रहा है तो मैं कुछ काम कर रही हूँ घर का, मैं कुछ धनिया या पुदीना साफ कर रही हूँ। एंड शी वाज ओपन टू दैट आइडिया, शी सेड या यू शुड डू इट। तो जो भी सीन्स में गुलशन अपने जो इनपुट दे रहा था या मैं जो इनपुट दे रही थी, इट वाज वेरी ओपनली एक्सेप्टेड। कमाल की बात यह है कि टाइगर बेबी प्रोडक्शन हाउस के जितने भी लोग थे सेट पे डायरेक्शन टीम में, they all were so sensitive towards actor and their time of performance that they were taking care of it. There was silence. Everybody was very calm. There was no shouting that is happening. Even though we were shooting in the night in one house, हमारे सारे scenes वही थे. हम्म। But they all were so sensitive and हर बार सीन करने में मजा भी इसीलिए आ रहा था क्योंकि when you have director like Reema Kakti who allows you that kind of a space to perform, and also when you have a co-actor like Gulshan जिनके पास he has a very good experience and he's technically very good. You know how the camera works and edit पे क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा. He's very insightful like that, and he's also very giving. So scenes जब आप करते हो, it's all about give and take. हम्म। And I think I enjoyed that give and take because it was Gulshan and because there was Reema and such a team on the set. And literally हम उठते थे, हम जाते थे सेट पे, काम करते थे, सीन से रिलेटेड बात होती थी, काम खत्म करके होटल गए and then come back again.
We shot this in Bikaner. But I am actually quite surprised because 12th May को ये रिलीज हुआ था and they called me for screening, but मैं यहाँ न्यूयॉर्क में हूँ तो मैं स्क्रीनिंग के लिए नहीं जा पाई. एंड फिर 13 तारीख को आई थिंक मैंने खुद पूरा शो देखा एंड मुझे भी बहुत मजा आया क्योंकि मुझे रियलिटी इसकी पता थी कि ये बनने में कितना टाइम लगा. 2 लॉकडाउन भी गए, रुक गया, फिर शुरू हुआ, फिर रुका, फिर शुरू हुआ. उसके बावजूद शो इतना अच्छा निकल कर आया एंड एवरी कैरेक्टर उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है. आप एक एक कैरेक्टर को भूल नहीं सकते, जो बहुत रेयरली होता है कि आप एक ऐसा शो देखो जिसमें कोई एक हीरो एक हीरोइन नहीं है. द स्टोरी इज वर्किंग लाइक स्टोरी and all the characters and their situations are equally impactful, and everything that is on stake in the situation as an audience you feel that. So that was really amazing. And then to Gulshan actually messaged me because I'm not very active on Twitter, and यहाँ पे I'm living like we are literally uprooted here for 3 months, Namit and me. So I'm also living here like a New Yorker, you have to do all your work by yourself. So I wasn't paying that much attention. And I'm so far away from Bombay right now. But Gulshan actually told me that I don't know if you're checking, but I'm getting a lot of messages, for a scene. That's when I thought, really? And then I started checking. मुझे पता ही था Instagram पे DM में भी कुछ hidden request करके कोई page होता है जिसमें you get messages from people. So Namit told me, that's when I checked, and I think since 12th May till now, every day the amount of appreciation and messages I'm getting from known and unknown people, it's quite surprising actually. क्योंकि आप बहुत लॉजिकली सोचते हो ना, आप ये सोचते हो कि मैंने काम किया है जो जो करने में मुझे मजा आया और मेरे 2-3 ही सीन है. देन आप भूल जाते हो, आप इतनी उम्मीद नहीं करते. But I've been quite pleasantly surprised the way the show has been appreciated and the way people have appreciated my work to an extent that they're writing me the details of my scene. कि उस पॉइंट पे आपने जैसे लुक दिया था and उस टाइम पे जब आपने जैसे बैकवर्ड बोला, I could really relate to it. तो वो सुन के फिर लगता है कि ओके, काम सही किया, because ultimately whatever scene you do, no matter how many you have, you want to touch some nerve uh, when people are watching it, that something where they could connect or relate to. Yeah. So I'm just very happy that I'm able to sense that people are through their messages are letting me know that how they did connect with Shivangi's character and her reality and where she comes from, even though they were just two scenes. So I think now I've started checking Twitter because अब सब लोग जब कर रहे हैं, then मुझे लग रहा है कि okay, what should I do? So I just retweet because I don't understand Twitter at all. I don't know. But I mean, through your show, I can say that all the people, if I've not replied, I'm sorry, but I've never experienced this, but I'm flooded by so many DMs and messages. So thank you to everyone who really liked my work and the show. Yeah, Those scenes were very powerful, but yeah, scenes so powerful थे, dramatic scenes थे, and you have जी, full scope as an actor, and as you said, you had a good co-actor and a good team yeah, also. You had a good yeah, team. yeah. And I'm Because really it is a collaborative work at the end of the day. किसी एक का अच्छा काम हो उससे कुछ होता नहीं. जब सबका काम अच्छा और सबका फोकस एक ही जगह पे हो तभी उसका आउटकम वैसा मिलता है जैसा भी हमको मिल रहा है. कमाल की बात है, 2-3 साल तक वो क्वालिटी मेंटेन रही, मतलब वो ऐसा नहीं लग रहा या है कि ये कभी और छूट, being या shot from a very long time. So, या and apart from your two scenes also, वो as you said, the writing, आप लोग के relationship को अच्छे से slowly slowly जी, develop किया गया है, छोटी छोटी चीजें, जी, when small small things, like in the private space in the bedroom, when wants to या make love, you don't want to make love, and when you want to make love, he या doesn't want to make. So all these things build up, to that final या dramatic. एंड एक बहुत अच्छी चीज है इस सीरीज में, ये तो थ्रिलर है, फुल मसाला है, पूरा एंटरटेनमेंट है, बट एट द सेम टाइम व्हाट आई रियली लव इज इट्स वेरी मीनिंगफुल एज वेल. It has touched on या various topics like caste, intercaste marriage, and जो आपका जो कैरेक्टर, आप लोग का जो डायनेमिक्स है वो है
विमेन एम्पावरमेंट की विमेन जैसे गुलशन वॉन्ट्स हिज डॉटर टू गो फॉर कंपटीशन लाइक योर आप लोग की डॉटर दिल्ली, और आप चाहते थे कि वो नहीं जाए, तो यू आर जी रिप्रेजेंटिंग दैट मतलब उस पार्ट ऑफ सोसाइटी जो विमेन ही विमेन को मतलब पीछे रखना चाहती है। तो बिल्कुल इसमें कोई बिल्कुल उनका फॉल्ट नहीं होता, बट द वे दे हैव बीन यू नो yeah because that's the reality she comes from या and main कमाल की बात राइटिंग की यही है जो मुझे पढ़ने में मजा आया। सबकी रियलिटी जो अलग होती है उसके वजह से सबके सही और गलत की डिक्शनरी भी बहुत अलग होती है जी एंड क्लैशेस हमेशा उसी में होता है। तो शिवांगी जो किरदार है उसका जो सच है और उसका जो सही गलत है वो उसके लाइफ एक्सपीरियंस से आता है। उसने जो लाइफ लीड की है और उसके हिसाब से वो सोच रही है कि वो अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट कर रही है। हम्म एंड गुलशन जो लाइफ जी रहा है बाहर अपने काम की वजह से उसके वजह से उसका सही गलत शिवांगी के सही गलत से बहुत अलग है क्योंकि और वो ये भी देख पा रहा है कि शिवांगी कहाँ से आती है। उसको ये भी पता है कि उसको अपनी बेटी की लाइफ शिवांगी से अलग रखनी है विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग शिवांगी। सो हिज कैरेक्टर एंड अक्सर वही होता है जो लोग बाहर काम करते हैं जो लोग घर में ज्यादा रहते हैं हम्म क्लैशेस हमेशा दो अलग दुनियाओं के ही होते हैं। हम्म एंड मुझे अच्छी बात यही लगी कि द वे ही टॉक्स टू इवन हिज son, वो about sex, that I thought that was so important because मुझे हमेशा यही लगता है कि राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप सीख बिना प्रीची हुए दे पाओ। एंड इस शो में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं हम्म, जहाँ पे वो सही बात कही जा रही है विदाउट बीइंग टू प्रीची अबाउट इट, बट डीलिंग with it or expressing it as a matter of fact which I love you see in every's character, I love and these वो two बहुत scenes with his important son है। and daughter. Those scenes were, I think, Yeah. one of the best scenes of the whole, apart from the thriller and Vijay Varma. Yeah. And I think those Yeah. two scenes were very nice, very good scenes with his son and daughter. Yeah. एंड Very well मुझे वो written. चीज बहुत अच्छी लगी कि जो भी केस में हो रहा है Yeah, हाउ इट्स affecting everyone's personal life right. because of the case, how every character's journey is going through the challenge of duality that is going in their mind and in their life in the society they live in, like Soham's character, Ah, how he's so scared to be a father now because the world that he's living in he also stuck into it. He was also part of it right. and now he doesn't know what to do. It's such an inner conflict as a human being that he's going through, which was so well portrayed by him and so well written by Rima. Yeah, Rima, Zoya, and there are some other writers as well. Yeah, So, yeah. Rima directed all your episodes, or there was some other Ruchika also it was there in one. So Ruchika and Rima both did. Ruchika had done my दोनों ने मिलकर किया था, like the fight scene and the emotional scene was done by Rima. The other home scenes and the love making scenes were done by Ruchika. So दोनों ने मिलकर किया था। Episode wise, it was episode wise they directed the thing. वैसे नाम तो I ऐसे ही don't आता है know about कि हाँ this I don't know episode is about directed that by this because person. Hmm. because it's actually directed by both of them. Right. दोनों ने मिलकर ही डायरेक्ट किया है और uh, I won't be the right person to tell how much who because I shot only for my scene because we were doing only the house scenes at that point in those 5 days in Bikaner. तो कुछ any special preparation you did for the role? What about accent and all that? What about the language? उन्होंने तो किसी राक्षस का अवतार ला गया है। So what had happened? There's a very slight difference between when you remove Haryanvi accent and Marwadi accent. अच्छा You know, हरियाणवी में द और न जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड होता है उसका। मारवाड़ी में श स हो जाता है पर द ही रहता है, वो ध या ड नहीं बनता। अब ये चीजें मुझे पता है क्योंकि कुछ तो थिएटर एक्सपीरियंस भी हेल्प करता है और कुछ क्योंकि मैं खुद भी राजस्थान की हूँ, मेरी पैदाइश राजस्थान की है। तो घर पे हम हिंदी में बात करते हैं लेकिन जो मेरे रिलेटिव्स जोधपुर से हैं, उनसे मैं मारवाड़ी में बात करती हूँ। तो मैंने ये डिफरेंस आई थिंक रीमा को बताया था रीडिंग में एंड शी वाज क्वाइट ओपन टू इट।
एंड मैं 2 बार करके बताती थी उन्हें, एक बार जिससे मैं मारवाड़ी शब्द डालती थी, एंड देन शी वुड लिसन, शी लाइक कि नहीं नहीं, क्योंकि अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा, देन आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क, लेट्स just keep the accent, don't make it completely Marwari. हम्म, So the focus was to how to bring the accent more like, जैसे मारवाड़ी लोग हिंदी में बात करते हैं तो वो हम्म। कभी शानदार नहीं बोल पाते, वो शानदार बोलते हैं. सो मुझे ये थोड़ी बहुत चीजें पता है, बट एक्चुअली कुडोज टू विजय, क्योंकि विजय ने जो मारवाड़ी एक्सेंट पकड़ा was bang on, and he's not Marwari, he's not Rajasthani. So yeah, it was quite amazing to see how he was working on his accent. एक का तो मैं फैन हो गया, मतलब इट्स क्वाइट अ डार्क कैरेक्टर एंड आई डोंट नो हाउ व्हाट how he prepared, It's a very dark character and Yeah. इंडियन जोकर लग रहा है। काफी काफी अच्छा Yeah, काम किया है उन्होंने और बहुत बहुत अच्छा काम बहुत किया. ही And he ही कम इन he द just लाइमलाइट। got that. Actually मुझे लगा विजय ने तो वो मारवाड़ी एक्सेंट जो जिससे, and मारवाड़ी जो कुछ चीजें है ना, राजस्थानी चीजें, वो इतनी बैंग ऑन पकड़ी. जैसे राजस्थान में ना ये बहुत होता है, आप जब भी किसी से कई बार बहुत बार मतलब बहुत वक्त के बाद मिलते हो, तो पहली चीज जो वो बोलते हैं ना, वो यही बोलते हैं, पहचाना मुझे. अच्छा। एंड दैट ही जस्ट गॉट इट सो करेक्ट, बिकॉज वो एक्चुअली वैसे ही बात करते हैं. जितनी जब भी वो आपसे मिलेंगे, पहली चीज नमस्ते कैसे हो, वो ये नहीं कहेंगे, वो सीधे ये कहेंगे, पहचाना मुझे. So yeah, बहुत it was बहुत quite amazing what he's done and what he's actually keep doing after one project after another. It's quite amazing. प्रिटी डार्क। Yeah. और बताएं. और कुछ यू वांट टू शेयर एनी एक्सपीरियंस यू हैड और एनी एडवेंचर एनी फन और एडवेंचर सम। तो ऐसा नहीं था एक्चुअली इसमें, तो इतना मुझे मतलब 4-5 दिन ही हम काम कर रहे थे, तो इट वाज प्रीटी प्रोफेशनल, शूट पे लाइक इट कोई वाज लाइक अ इंसिडेंट, जॉब. शूट पे कोई ऐसा तो कुछ हुआ नहीं. आई एम टेलिंग यू, इट वाज अ वेरी फोकस्ड एनवायरनमेंट. इंसिडेंट। Everybody would just come on the set and work for the scene that day. एंड जो भी कॉल शीट में जो टाइम लिखा है, एक्चुअली उसी टाइम पे शुरू होता था और एग्जैक्टली उसी टाइम पे खत्म होता था, विच वाज क्वाइट अमेजिंग, जो बहुत कम देखने को मिलता है इंडिया में. Acha, I didn't know सो आई these थिंक things, वो but उनके, creatively also I rate these Zoya Akhtar and Rima Kakti amongst one of the best, right now या directors. मतलब जो टाइम हमारा कॉल टाइम होता था, जो टाइम हमारा मेकअप स्टार्ट होने का होता था, जो टाइम हमारा ऑन सेट होता था, जो टाइम हमारा रिहर्सल टाइम होता था, वो उसी टाइम में होता था. Still दैट्स production, व्हाई दे, tiger baby. या, Hmm. it was amazing. It's quite that way you get to see. It's quite western that way, क्योंकि वेस्ट में ऐसा होता है बहुत, कि हर चीज टाइम पे शुरू के टाइम पे खत्म होती है, जो टाइम कॉल शीट पे लिखा हुआ है उसकी रेस्पेक्ट की जाती है. Correct, तो correct. वो बहुत कमाल की चीज थी, बिकॉज उससे क्या होता है ना, आई थिंक आपकी एनर्जी भी बहुत सेव होती है. A lot of energy goes waste on the set, faffing around. Hmm. And ideally तो होना वही चाहिए, that you should treat it like a job. You go there, you respect everyone's time, you do the job, and save energy and use energy only for that moment, Right. because that is the reason why you're there. So Absolutely. that I personally something I really enjoy too, because I also don't enjoy just sitting on the set and like chit chatting Hmm. about things and life that you can do in your personal life anyway. Hmm. But when you're on the set, you should just completely be focused on your work, because a Abs- lot can come out when that happens. Absolutely. Absolutely. I really like the camera work also. Cinemat. Can you tell me a little bit about the cinematographer if you interacted with? Because I think he was I there did not. throughout the series, and I really liked his work, हाँ, तो वो writing वो and भी all. टीम बहुत बार चेंज हुई है, एंड I actually did not interact much with the. नाम I तो think एक the ही only time कैमरामैन I का did आता है little. शायद, वो तने सतम, एक ही कैमरामैन का नाम आता है मेन हाँ, वो फिल्म एक में। ही जन है, एंड मैंने उनसे बहुत ज्यादा बात नहीं की थी.
क्योंकि मेरे जो भी इंटरेक्शंस हो रहे थे वो मेनली रीमा, रुचिका, गुलशन के साथ हो रहे थे. एंड ये एज अ एक्टर आई आपको थिंक कुछ लगा दिस, लाइटिंग के बारे में, कुछ आपको कुछ कि ऐसा कुछ पता मुझे नहीं वो चला? नहीं लगा. आई थिंक देयर वाज ओनली वन सीन व्हिच वाज लाइक अ यू नो अ वेरी मंडेन रूटीन वाला लव मेकिंग सीन बिटवीन गुलशन एंड मी. एंड होता क्या है कि जब तक मैं कोई सीन कर नहीं लेती तब तक दिमाग में मेरा वो सीन बहुत बड़ा होता है. देन वंस आई डू इट देन आई फील लाइक ओके, इतना बड़ा नहीं था जितना मैंने सोचा था. तो मैं वो सोची थी कि ये कैसे करेंगे लव मेकिंग सीन, बिकॉज मैंने कभी किया नहीं था. And Ruchika and Gulshan were very kind enough to ask me if I'm comfortable doing it. And they were like, if you're not comfortable doing it, we won't do it. I said, no, no, it's very important for the character and for their marriage. Because वो लिखा हुआ भी इतना अच्छे तरीके से था that, they are doing it like it's a routine thing. Yeah. And she gets upset with that because that is a very big trigger point uh, for her character to think that something is off Yeah, suspected. with him. Yeah, and it is also a very big trigger point for him when he realizes that something about Sonakshi's character, about her personality, which is Right. making him drawn towards her. तो मैं वही सोच रही टेक्निकली ये कैसे होगा. And there were three cameras, there was one camera up and there were two cameras here. Um, And again, I'm telling you, I was so lucky to have Gulshan as my co-actor because, he was taking care that, this blanket and mera gown upar nahi ja raha ho. And Ruchika was directing me that you have to look up in the camera and show your reaction over there. So that was new for me. Actually, होता वही है, अगर आपको सही को-एक्टर, सही डायरेक्शन मिल जाता है ना, देन जल्दी हो जाता है. वही। तो वो सीन इतना टेक्निकल था कि पहली बार मुझे समझ में आया कि ये जो हम इंटीमेट सीन्स और लव मेकिंग सीन्स देखते हैं, ये एक्चुअली एक्टर्स के लिए इतना कोई इंटीमेट वाला होता नहीं है, उनके लिए बहुत टेक्निकल होता है. बिकॉज आपको जो भी करना है एक्सप्रेस, वो कैमरा को करना है. एंड थ्रू दैट यू हैव टू वर्क विद ऑडियंसेस इमेजिनेशन. So it's such a technical thing. In fact, when you're doing a dialogue scene, you still get a chance to, feel the emotion and express it through your tone, through shouting, to by being quiet, by mumbling many things. But when you do just a lovemaking scene where there are no words involved, there are only two bodies involved, and you're playing with the imagination, and you have to play through the lens. It's very technical. Yeah, and it can become non-challenging only when you have a helping co-actor and a very sensitive team on the set. Right. So there were not too many people on the set when we were doing that scene. So they were taking care of that. अब ये सारी चीजें क्या होती है, जब आप खत्म कर लेते हो शूट इन 2-3 निकल जाते हैं, फिर आप घर पे जब सोच रहे होते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि अरे हाँ यार, उन्होंने बहुत कम लोग रखे थे सेट पे. अरे हाँ, किसी ने चिल्लाया नहीं था. अरे गुलशन वाज रियली टेकिंग केयर ऑफ दैट. So these are the thoughts, these are the afterthought that comes once you're done with it. And Right. I remember once we were done with the scene, I told Gulshan, मैंने कहा यार, I thought मेरे दिमाग में बहुत बड़ा था. After doing it, I've realized ये तो बहुत ही technical है. I don't think now I'm gonna be scared doing any love making scene because I've realized the process of it is so technical. Right. Because And before that I'd only seen that as an audience, but to be in it, I realize now the reality of it. it was a very, as you said, a mundane routine kind of activity for them. So it was Yeah, shot that way, and everything was that way. So it depends actually. like I said, it's a collaborative work, and Gulshan was the one who was very clear, who had much more clarity. He was asking, what kind of lovemaking do you want? Do you want it to be intimate? Do you want us to kiss? Do you want us to do it romantically? How do you want to? She said, no, it has to be boring. So Uh, these questions are very important to ask, right? When you just say husband wife are having sex, they could be many types, Absolutely. but unless the director doesn't know what kind of sexual relationship is this, have they reached at this point in their marriage, we Right. won't be able to we won't be able to give that. वो Absolutely. क्लैरिटी रुचिका के पास थी, एंड वो सही, और वो सारे सवाल गुलशन के पास थे.
So that's why we got that clarity. Yeah, yeah. And that's why even when I saw it, I understood that why was he asking those questions. After Hmm. when मैं खुद जब देख रही थी तब मुझे समझ में आया. तो मैं खुद भी एक्चुअली ये शो देख रही थी एज अ व्यूअर एंड मैं खुद अपना काम भी ये देख रही थी एज अ व्यूअर टू नो कि मैं जो सोच के वहां किया क्या वो सच में निकल कर आया एंड हाँ। या नहीं नहीं, निकल कर आया, बहुत अच्छा निकल कर आया। सभी का काम और पूरा शो ही बहुत अच्छा है। जी. जी जी। मैं आपको पहले, आपको मैंने देखा था वो मकरंद देश पांडे जी के प्ले में, और फिर वो कुंदन भी कुछ दिन थे. कुंदन शाह के लिए फिर आपने ऑडिशन किया था, तो ओ माय गॉड, वो सब भी मैं नहीं भूला हूँ, बिकॉज आई आई थिंक यू आर अ वेरी ग्रेट एक्टर, एंड यू नो यही होता हाउ है इज बीन कबीर योर बिकॉज जर्नी। we give so many endless screen tests that after a point what I end up remembering is the people I've met. I don't remember the screen test that I've given because acting to is just a release. Now you release it and then you forget about it and then you move on. नहीं, जो अच्छे एक्टर Uh, होते हैं उनका स्क्रीन टेस्ट दिमाग में रह जाता है ना, अगर आपने लिया हो तो रह जाता है। thank you, thank you. तो अभी हाउ हैज बीन योर जर्नी टिल नाउ, एंड वेयर डू यू गो फ्रॉम हियर, एंड आई थिंक यू शुड गेट मोर So लॉट ऑफ गुड रोल्स। I think after the first lockdown, I had shot for this web show called Black Widows, जो ओके। तब Z5 पे रिलीज हुआ था. There was Param, me, Mona, Shamita, Swastika Mukherjee. प्रोडक्शन बॉम्बे का था बट डायरेक्शन टीम जो थी वो कैलकटा की थी. अच्छा। जी एंड इट वाज उन्होंने राइट्स लिए थे फ्रॉम ब्लैक विडोज and they wanted to do an Indian version of it that was for Z5 that had come out in 2021 because we shot after 2020. उसके बाद 20 पर हुआ यही था कि मैंने सबसे पहले शूट दहाड़ किया था बट क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो फिर मुझे लगा अब ये प्रोजेक्ट तो पता नहीं आएगा अभी कि नहीं आएगा. ब्लैक विडोज पहले आ गया. फिर उसके बाद ये दहाड़ अभी रिलीज हुआ है. Then there's another project by Maddock Production House. It's a web film called Happy Teachers Day. Um, it's directed by Nikhil and निम्रत कौर है उसमें, भाग्यश्री है, मैं हूँ, राधिका मदन है और भी बहुत सारे कमाल के कलाकार हैं. Um, so that will, that have almost we finished the shoot. I think only a song shoot is left, which once I go back, we'll do it. And I think it will release by, it should hopefully release by end of this year. I don't know exactly which platform, so, and I'm not even allowed to say that, so I'm not even taking the risk of So throwing it's a any film, names. We'll not see a when web it's released. series. It's a web film. Well, web film. Yeah, it's a web film. So yeah, that जो सॉन्ग शूट है वो हम खत्म करेंगे. एंड उसके अलावा एक नाटक है जो नसीर सर ने डायरेक्ट किया है मेरा, औरत औरत. हाँ। उसके शोज अगस्त में है, जुलाई में है, जून में देयर इज अनदर प्ले दैट आई एम डूइंग कॉल्ड शिकार व्हिच इज बाय पैचवॉक एंसेंबल, पूजा स्वरूप एंड शीना खालिद. दे हैव डायरेक्टेड दिस डिवाइस प्ले. उसमें सौरभ नैयर है, रिताशा है जो दहाड़ में भी थी, मैं हूँ, बहुत बहुत सारे कमाल के एक्टर्स हैं उसमें. तो वो शो पृथ्वी में है जिसके लिए अभी मैं वापस जब बॉम्बे जाऊंगी देन आई हैव टू गेट बैक टू दैट रिहर्सल एंड डू द शोज. तो दैट इज गोना बी बाय एंड ऑफ जून एट पृथ्वी. सो या अभी तो फिलहाल ये है प्रोजेक्ट. नहीं, fantastic, and all the best to you, and I wish you थैंक यू सो very मच. best and lot of great roles, and I wish to see you in lot of wonderful roles, versatile roles, because you're a very fine actor, and which we have in India today, one of the finest. I think you have a lot of, थैंक यू. what I've seen, but and versatile also. ये तो आपका एक रूप था एक दहाड़ में, but I've seen you in other things, and I'm sure You you have nailed it. taken so many of my screen tests, so Nailed obviously it. you have seen more closely than anyone else. हाँ, आई थिंक कुंदन शाह का 2 बार लिया था, जी. और बाकी तो मैंने वो प्ले देखा था आपका, और कुंदन सर का 2 बार लिया था, वो भी बहुत अच्छा, सर को भी बहुत पसंद. जी.
ठीक है, बिकॉज एक बार देख लेने से ना एक इम्प्रेशन इज इनफ। जितना क्वांटिटी कितना भी, एक दो अच्छा, मतलब यू नो दैट दिस पर्सन हैज समथिंग या फैंटास्टिक। बिकॉज Gulshan ka bhi, when I had taken earlier that interview, I knew that he's a, he will be a, even Gitanjali ji, when I had seen her, these people I contact whom I think is going to, do very well. आई थिंक सब समय समय की बात होती है। जब आप जी जी, समय सही चलता है तो फिर राइट। आपने एक सीन भी किया हो, वो उतना ही बड़ा इम्पैक्ट आपके करियर में दे सकता है जो एक लीड रोल दे सकता है। और अगर समय सही नहीं होता तो आप 6 प्रोजेक्ट लीड रोल में कर लो और लोगों को याद नहीं रहता। तो इट्स ऑल इन द टाइमिंग। हाँ, सब कुछ शायद टाइम टाइम के हिसाब से। टाइम टाइम की बात है। बस सो नाइस टॉकिंग टू यू यार कभी। Yes, yes. Thanks a lot. And so thanks a lot, Shruti. Thank you so much for taking out time for Cinema Satsang and Cinema Satsang viewers. Really appreciate it. थैंक यू सो मच। आई नेवर थॉट कि मैं जब न्यूयॉर्क में होंगी तब मैं आपसे बात कर रही होंगी ऑनलाइन। सो लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति व्यास है। और अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू सिनेमा सत्संग। थैंक यू।